You didn't send me the answer. What was the last topic we have covered? कहाँ तक कर लिया था? प्रोटीन तक कर लिया है ना? You're writing something, Rohit? Good afternoon. Okay, you don't know my mail ID. You have to ask ना then बच्चा. कोई बात नहीं, I'll tell you. चलो, write down. Next make the adding carbohydrate. थोड़ा सा percentage carbohydrate का भी होता है. Write down carbohydrate. Lipid and protein we have completed, right? Write down carbohydrate. They occur in the form of carbohydrate. They occur in the form of glycolipids and glycoproteins. Both of these forms are confined exclusively. Both of these forms are confined exclusively. What is the meaning of exclusively? What is it? Specific. जैसे कि सपोज दैट आप किसी शॉप पर जाओ और वो आपसे बोले दिस इज एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड फॉर यू. ठीक है, इट्स वेरी स्पेसिफिक. यूपीएससी हैज ऑलरेडी यूज्ड दिस टर्म इन द प्रीलिम्स. ठीक है, मेंस में भी एक ज्योग्राफी के क्वेश्चन में यूपीएससी ने इस वर्ड को यूज किया था. सो इट वाज अ लिटिल डिबेटेबल बट दैट मींस ओनली एंड ओनली. ठीक है, वेरी स्पेसिफिक. राइट ऑन. Exclusively to the extent to the external membrane surface, to the external membrane surface. The scientist named Bell in 1962 gave his opinion that polysaccharides confer that polysaccharides confer some stability to the lipoprotein complex in the membrane. Full stop. These carbohydrate chains may consist 2 to 60 monosaccharides. May consist 2 to 60 monosaccharides units either in straight or branched form. Full stop. Next stanza में लिखो इसी में. Along with the peripheral proteins, they form specialized sites on the cell surface. That allow cells to recognize each other.
cells to recognize each other. एक जनरल पॉइंट लिख लो, कॉम्पोजिशन खत्म हो गया. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली, ये ऊपर ही कहीं लिखना था बट जस्ट ऐड इट, इज जनरली 70 to 100 angstrom thick, 70 to 100 angstrom thick, with a major composition of, with a major composition of proteins, proteins ब्रैकेट में लिखो 75 to 80%, depending depending on the different types of cell, depending on the different types of cell, full stop. But generally this proportion is, but generally this proportion or ratio of lipids and proteins, but generally the ratio of lipids and protein is almost equal, is almost equal, that is about 50% each, that is about 50% each in biological membranes, in biological membranes. तो आप एक पॉइंट ऐड करो इसी में, इसी पॉइंट के कंटेनर्स में ऐड करना. फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल माय जनरल क्या होता है, सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दैट दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में लिपिड कॉम्पोजिशन एंड प्रोटीन कॉम्पोजिशन, ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या मेजर होगा, लिपिड ज्यादा होगा या प्रोटीन परसेंटेज ज्यादा होगा? व्हाट इज मैक्सिमम, लिपिड मैक्सिमम और प्रोटीन इज मैक्सिमम? लिपिड, just general guess, just by seeing the structure. Anushka, Vishwa, what do you think? Protein is maximum, ठीक है. इन जनरल आपकी जो सेल्युलर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि इसको, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें प्रोटीन परसेंटेज इज मैक्सिमम देन द लिपिड परसेंटेज, ठीक है. यस, लिपिड कंटिन्यूअस होता है, बट अगर आप परसेंटेज, अगर आप सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करोगे, देन यू फाइंड जहां पे भी प्रोटीन होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, ठीक है. तो परसेंटेज के मैटर में प्रोटीन इज मच हायर देन दैट, ऑलमोस्ट आपका 70 to 75% आपका लिपिड होता है, सॉरी प्रोटीन होता है, एंड 20 to 25% या 25 to 30% आपका लिपिड होता है, ठीक है. ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, बट वी व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इनिशियली मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया था, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी पूरी सेल की होती है. इनसाइड ऑफ दैट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द टोनोप्लास्ट. सेल मेम्ब्रेन डिपेंडिंग, जैसे कि अगर हम लोग बात करें माइलिन की या फिर आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, उसमें ये परसेंटेज मैटर करता है. दैट्स ओनली वी हैव टू राइट इट, ऑलराइट. फॉर एग्जांपल माइलिन, फॉर एग्जांपल माइलिन contains 18% protein, 18. Myelin contains 18% protein and 76% lipid, and 76% lipid. While the mitochondrial inner membrane, while the mitochondrial inner membrane contains 76% protein and 24% lipid. 76% proteins and 24% lipid. Okay. Next big heading, role of lipid molecules. Role of lipid molecules in maintaining the fluid property of membrane. The fluid property of membrane. First, write down types of movement of lipid molecules. Types of movement of lipid molecules. देखो,
So what are the lipids found in the plasma membrane? इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, then we'll write about it. What are the types of the lipids found in the plasma membrane? ये क्वेश्चन है आपका. Yesterday we have seen that PYQs, है ना? In that PYQs इसमें होगा अभी. देखो इस क्वेश्चन में जहां पे भी फंक्शन पूछा गया है, द रोल ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, ये वाली हेडिंग है, ये आप लोगों को मेंशन करनी है. ठीक है, अलग से क्वेश्चन नहीं है, मैच मतलब मर्ज करके क्वेश्चन है. इसमें भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है जो ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कैसे लिखेंगे? लाइक व्हाट टू राइट इन दैट थर्ड क्वेश्चन 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ टू एड्रेस दिस क्वेश्चन. सेकंड वाला तो अभी हम लोग ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, लाइक हाउ टू, पानी दे दो, हाउ टू एड्रेस दिस थर्ड क्वेश्चन. इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? रिपीट व्हाट यू सेड, आई डिडंट लिसन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, डिस्कवरी. ठीक है, देन बॉडी में कॉम्पोजिशन लिखेंगे. ओके, यस. तो दिस पर्टिकुलर आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है. तो दिस पर्टिकुलर आंसर स्टार्ट विद दैट इंट्रोडक्शन. इसमें ना द कंफ्यूजन इज दैट विद द स्टूडेंट कि इसमें सिर्फ लिखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर. सो व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को बिना लिखे हुए सीधे आपका डायग्राम बना देते हैं. बट दैट्स नॉट, अगेन दैट आई एम टेलिंग, दैट इज नॉट द वे टू आंसर. ठीक है, आप इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप प्रॉपरली हेडिंग डालोगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेंशन करोगे एटलीस्ट, yeah, that in that ultrastructure plasma membrane lipid and proteins are the major macromolecule which have the composition of this. ultrastructure का मतलब guys simple, आप उसका सिर्फ आपको composition lipid और protein का नहीं बताना है. you need to also have to tell कि कितनी इसकी परसेंटेज होती है, कितनी थिक होती है, कहाँ पाई जाती है, like every single thing. ultrastructure means it is talking not only about the chemical structure, नहीं लिखा है. ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर नहीं मेंशन है, फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब अल्ट्रा बोला मतलब सब कुछ बताना है. ठीक है, फिर आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे, जब जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन यू विल मेक द हेडिंग द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर आप उसका बायोलॉजिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन लिखोगे. फिर आप एक बहुत डिटेल्ड डायग्राम बनाओगे जैसे कि हमने ऑलरेडी बना रखा है, इन विच यू आर गोइंग टू मेंशन एवरी सिंगल थिंग. और अगर आपको लगता है तो जब हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर दो 70. ओके, तो मेंशन हियर आल्सो 70 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक. ठीक है, देन इट विल बी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर. फिर आप सब चीज को मेंशन करोगे. ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक केल है, हाइड्रोफिलिक ये है, एवरीथिंग लाइक दैट. देन यू हैव टू एलाबोरेट इट, द लिपिड पोर्शन, द प्रोटीन पोर्शन, बिकॉज इट इज योर 15 मार्कर. अभी आई वाज मेकिंग द पेपर विद दैट मार्क डिफरेंशिएशन, सो आई हैव सीन दैट आईएफएस का भी तो नहीं दे रहा, बट आईएफएस का पता, जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को आईएफएस पता है कैसे देगा, जैसे 15 मार्कर का है, 10 + 2 + 3. समझ आ रहा है? सो दैट मीन्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर का प्रॉपर जो आपका एलाबोरेशन करोगे वो आपका 10 मार्क्स का होगा, फिर इसका डायग्राम होगा 2 मार्क्स का, देन दिस पोर्शन विल बी द 3 मार्क्स. अभी इस यूनिट को कवर करने के बाद आई विल शो दैट, सो यू विल गेट इट. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, द रोल्स ऑफ द लिपिड हैव बीन आस्क्ड स्पेसिफिक. देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझते हैं. So how many types of lipid found in there? Phospholipid is a major one. Yes, other than that, glycolipids. Other than that, sterol. That is in the form of cholesterol. ठीक है, yes, exactly. आप लोगों को यही मेंशन करना है that majorly 3 lipids are found in there. और देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, simple the fluidity of the membrane. When you are talking about the fluidity of the membrane, that means simple why it is semi fluid in nature or why it is fluid in nature. अच्छा, tell me guys anything. Suppose that किसी भी चीज को आपको fluid बनाना है, what is the one thing you can do? क्या करोगे किसी चीज को fluid करना है तो? More liquidifier. Add नहीं करना है कुछ भी. You do not need to add something. Just आपको किसी चीज को liquid करना है. Pressure and temperature. Obvious है, किसी भी चीज को आपको increase, किसी भी चीज को आपको fluid करना है. Suppose that this is a particular, किसी solid को भी अगर आपको increase करना है, then what you will do? Yes, increasing the temperature. Exactly. What you will do? Simply increasing the temperature. क्या होता है temperature increase करने से? What happens when you increase the temperature? How it become the liquid? The molecules become free. Why they become free?
यस 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 एग्जैक्टली. सो टेम्परेचर क्या करता है, आपकी एनर्जी, आपके मॉलिक्यूल्स क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. इन सिंपल, इन वेरी सिंपल वे, सपोज दैट इफ वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है, ये सिंपल क्या है, आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं. any kind of composition, any kind of material is made up of some kind of elements, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, किसी भी टाइप के एलिमेंट से बना होगा. एंड व्हाट अबाउट दीज एलिमेंट्स, यही तो है आपके एलिमेंट्स. जैसे ही आप इनको हीट प्रोवाइड करते हो, दीज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग. जैसे ही वो स्टार्ट मूविंग होंगे, बाय अब्सॉर्बिंग द हीट दे बिकम फ्लूइड. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लूइडिटी और द एनर्जी मॉलिक्यूल. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी उतना डीप में नहीं जाते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी यही है. सपोज दैट हाउ द फ्लूइडिटी इज मेंटेनिंग, what is the role of the lipid molecules in the fluidity. प्रोटीन का सच कोई स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है. why there is not any important role of the protein, because जहां पे भी पाई जाती है वो बहुत सॉलिड स्टेट में पाई जाती है. You know, it's a structural component, although lipid is also a structural component, but it's a very difficult to move that protein. प्रोटीन के बारे में we'll talk about. देखो, जैसे आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया. ठीक है, so that particular lipid molecule, what we have written in that yesterday, हम लोग ने क्या लिखा था यहाँ पे, ग्लिसरॉल, अल्कोहल और फैटी एसिड्स, है ना. इसी से आपका पोलर हेड बना है. दैट मींस आई एम सिंपली ट्राइंग टू से ये भी आपकी किसी ना किसी मॉलिक्यूल्स, किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग दैट एनर्जी, इनके बीच का जो दे स्टार्ट मूविंग. ठीक है, सो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द फॉस्फोलिपिड which is a major component of the plasma membrane, the liquidity increases. Is it simple? सिंपल है. ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी मॉलिक्यूल एक्साइट हो गए हैं और वो मूव करना से जा जाएंगे. तो बाय फर्स्ट वॉल व्हाट वी आर गेटिंग दैट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स द लिक्विडिटी इंक्रीजेस. गेट इट, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. अच्छा, सेकंड देखो, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द लिक्विडिटी डिक्रीजेस. The liquidity decreases. How? It is because of this cholesterol molecule. कैसे? This is a core concept actually examiner wants to ask to you. सोचो कैसे? कल वाला स्ट्रक्चर याद है? देखो, so what is cholesterol is made up of? Cholesterol is made up of? Cholesterol is a lipid. Lipid is made up of simple fatty acid chain, बाबा, है ना. सिंपल फैटी एसिड चेन से मिलकर बने होते हैं. देखो, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, आई डोंट थिंक इतना टाइम लगेगा इस बात को समझने में, बट इससे लगेगा ना, एक्सप्लेन लगेगा. आज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल जो आपकी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इट स्टार्ट मूविंग, राइट. एंड वी नो दैट कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन अ रेगुलर मैनर, they are found randomly in between the space, in between the place. Cholesterol molecule, अच्छा, we have heard that cholesterol molecules are harmful for the body, है ना, वो जाके ब्लड में accumulate हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं, क्यों है harmful ये? Because they do have the saturated fatty acid chain. ठीक है, what is the saturated fatty acid chain? What is the meaning of saturation? Highest, high fatty acid. What is the meaning of saturation? Yes, yes, please explain. वेरी गुड. किसी भी चीज की मैक्सिमम लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन. जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर साइकिल, वी से दैट व्हेन द हाइग्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल बिकम सैचुरेटेड विद द मॉइस्चर कंटेंट दे आर होल्डिंग, उसके बाद क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन, राइट. देखो, तो फैटी एसिड चेन क्या होती है, व्हाट इज फैटी एसिड चेन? दिस इज द फैटी एसिड चेन. ठीक है, यहाँ पे आपका COOH ग्रुप होता है, हर कॉर्नर पे आपका क्या है, C. इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन. देन व्हाट इज अनसैचुरेटेड? यस, एग्जैक्टली. यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है. दैट मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पहले क्या होगा, ये इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे.
देन दे विल गेट दैट। अभी यहाँ पे एक मतलब डबल बॉन्ड जनरली ब्रेक हो जाते हैं और फिर उनके पास हाइड्रोजन आ जाता है, दैट मीन। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं हो सकते। सपोज दैट इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट इज द नॉर्मल, सपोज दैट 25 to 27 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सपोज दैट 50 डिग्री सेल्सियस, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, बल्कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन। यहाँ का कॉन्सेप्ट आपका प्रीलिम्स का क्या है या मेंस का आपका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज रुको। जूलॉजी पढ़ाते पढ़ाते करंट में नहीं घुसना होता है ना। व्हाट इज रुको, रुबिस्को, रुबिस्को क्या होता है, ये करंट का है। रुको इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। नाउ टेल मी about that hydrogenation of saturation of oil. This is a co-linked concept. Every single concept is a linked here. What is a ruko, what is FSSI, ये क्या है, obviously I'll explain this, but थोड़ा तो देखूं जीएस कहाँ चल रही है आप लोगों की। What is FSSI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या इसका फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड फूड का स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। किसी आप रेस्टोरेंट में जाओ तो लोगों ने पहले ही सर्टिफिकेट स्टिक कर रखा था, एफएसएसआई ऑथराइज्ड अप्रूव्ड समथिंग लाइक दैट। यस यस, उसमें भी आपको होता है एफएसएसआई मैन्युफैक्चर, ठीक है, अप्रूव्ड। देखो रुको का फुल फॉर्म है रीयूज्ड ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक है, हम लोग ने बात सुनी है कि व्हाई यू शुड नॉट ईट दैट स्ट्रीट फूड, क्यों समोसे और ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए, है ना। वी मस्ट हैव हर्ड दैट, क्यों नहीं खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि समोसा इज अ प्रॉब्लम और दैट फ्राइड फूड इज अ प्रॉब्लम। वही समोसा अगर आप घर पे बना के खा रहे हो देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट बाहर से खा रहे हो क्यों, तो तब की प्रॉब्लम है। इज इट अबाउट द ओनली हाइजीन, नो इट्स नॉट अबाउट द ओनली हाइजीन। जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल ही मना होता है। देखो सो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ, ऑल्दो ये बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक आएगा। सो आपके जो फैटी एसिड्स होते हैं मतलब आपके ऑयल होते हैं, बट इन सिंपल सेंस दैट, ठीक है। जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं दे आर मेनली टू टाइप्स। एक आपके होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक आपके होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर द वेरी स्टेबल लाइक दिस, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर लाइक दिस। Which are much stronger, A or B, what do you think, what do you think, A is much stronger or B is much stronger, Drishy? A is much stronger. क्यों? When something is uniform, you can pack something very nicely. ठीक है, तो ये आपके फूड में कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा टेल मी, मस्टर्ड ऑयल और घी विच इज मोर स्ट्रॉन्ग, और विच इज सैचुरेटेड वन विच इज अनसैचुरेटेड वन। सबसे पहले टेल मी विच इज स्ट्रॉन्गर। A is much stronger, yes Nishan. He is more stronger, पक्का। मिसवा घी क्यों, दृष्टि, मस्टर्ड ऑयल इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, घी इज मच, ये जनरल क्वेश्चन है, इट्स नॉट समथिंग टू बायोलॉजी। कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट स्ट्रॉन्गर दैट मींस वी आर कंपेयरिंग, कंपैरिजन हमेशा आप कॉमन बेस में रख के चलते हो, है ना। तो दैट मींस सपोज दैट इफ वी आर टेकिंग एट द रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे घी की स्टेट क्या होगी आपकी, सॉलिड, व्हाइल मस्टर्ड ऑयल की क्या स्टेट होगी आपकी, लिक्विड। ठीक है, देन ऑब्वियसली घी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सो दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जब आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाते हो तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ द ब्लड दे बिकम एक्यूमुलेट इन योर ब्लड वेसल्स, दैट इज सिंपलेस्ट। ठीक है, जैसे कि घी है ना, घी को अगर आप, इसीलिए जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है उनको फैट्स खाने को मना करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए आजकल मार्केट में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स। अभी आपका सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, पता नहीं कौन कौन से ऑयल आ गए। बेसिकली अदरवाइज आपका खाने में क्या होता था, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इज योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, जैसे आप घी को टेम्परेचर देते हो वो क्या हो जाता है, वो घी आपका एक नॉर्मल, आपकी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, वी आर द होम्योथर्मल पीपल, है ना, हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि बाहर ठंड है तो हम लोग भी अंदर से ठंड हो गए। ठीक है,
सो हमारा जो घी कंटेंट होता है दैट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेंट, वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, और इसीलिए हार्ट पेशेंट्स क्रिएट होते हैं, ब्लड की फ्लो स्पीड कम हो जाती है, दिस एंड दैट, ठीक है। जैसे ये आपके ब्लड वेसल्स है, इसमें आपकी क्या हो रही है जाके, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन है आपकी बॉडी का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घी आपकी एक्यूमुलेट हो रही है और ब्लड फ्लो की स्पीड फिर ब्लड में ये क्या कर रही है, क्रिएट हर्डल कर रही है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जनरली, जैसे कि डालडा, एक बहुत पहले येलो कलर की पैकेट आती थी, उसमें लिखा होता था वेजिटेशन, इस पे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है, दिस इज नॉट समथिंग आई एम टेलिंग एक्स्ट्रा, दैट इज नॉट रेलेवेंट। तो आपके जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं ना, ये सपोज यार आपका मस्टर्ड ऑयल है, मान लो, ठीक है, इन्होंने एक बार यूज किया, क्या दिया, टेम्परेचर दिया, चलो ठीक है, एक दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, फिर और क्या किया, नेक्स्ट टाइम पे इसको रीयूज किया, फिर नेक्स्ट टाइम पे इसको यूज किया, दैट इज कॉल्ड दैट हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, समझ आया। एंड देन देखो आप, अगर आपने भी सपोज कभी कुकिंग करी हो, तो अगर आप ऑयल को बार बार यूज करते हो एंड you'll keep it for some time like 1 day or 2 day, there's a slight, आपके मस्टर्ड ऑयल में भी एक पतली सी लेयर सी जम जाती है, that is the hydrogenation of oil, then it will be the harmful for the cholesterol, समझ आ गया, that is the concept of the saturated and unsaturated fatty acids, yes, yes। अच्छा, अगर आप लिसन, अगर आप देखो, ऐसा नहीं, आई नो दैट समवन विल आस्क दिस क्वेश्चन, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दैट आई एम नॉट सेइंग दैट ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ, बट यहाँ पे सिंपल आई एम ट्राइंग टू टेल द कोलेस्ट्रॉल की जो चेन है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके लिक्विड स्टेज में होते हैं, सो दे डू नॉट, वो तभी आपके ब्रेक डाउन होंगे जब आपका हाइड्रोजनेशन होगा तब, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ओके, फर्स्ट ऑफ आई नीड टू लिसन योर क्वेश्चन, हाँ, यस, नो नो, जब आप, ये केमिस्ट्री का पॉइंट है, ऑल्दो जब आप वन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो, जैसे कि इसको हम लोग बायोलॉजिकल सेंस में अगर कंसीडर करें, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहला वाला फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलता है, बहुत एनर्जी है, सेकंड वाला मॉलिक्यूल लेस एनर्जी, उससे सेकंड मॉलिक्यूल लेस एनर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे फॉस्फेट मॉलिक्यूल से इक्वल एनर्जी ऑफ अमाउंट रिलीज होता है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो बहुत कम एनर्जी में ब्रेक डाउन, ठीक है, इट्स नॉट लाइक, समझ आ गया। सो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल में क्या होता है, एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इनकी जो ये फैटी एसिड्स की चेन है, ठीक है, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स में 5 आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं, बिकम स्प्रेड होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, they become spread because they are not present uniformly, they are present in the irregular way, so जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ये भी आपके, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल इज अब्सॉर्बिंग द टेम्परेचर, फॉस्फोलिपिड आल्सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, फॉस्फोलिपिड भी क्या होते हैं, थोड़े से रिलीज होना स्टार्ट करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो आपके बहुत सॉलिडिफाइड में प्रेजेंट था, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसकी जो फैटी एसिड चेन है, ये वो क्या होता है, वो ओपन होने लगता है, और जैसे ही ओपन होने लगता है, the space between the two phospholipid molecule get filled, and because the space between the two phospholipid molecule get filled, the fluidity, समझ आ गया। सो टेम्परेचर समझ आया शिवा, पक्का। सो ऑलवेज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्लूइडिटी आपकी इंक्रीज नहीं हो सकती है, दैट इज सम क्वेश्चन अबाउट दैट, यूपीएससी स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहती है कि क्या आप टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमेशा फ्लूइडिटी इंक्रीज ही करो बिकॉज ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, यस, अप टू द सर्टेन लिमिट आपकी पहले फ्लूइडिटी इंक्रीज ही होगी बिकॉज ऑफ फॉस्फोलिपिड कंटेंट अच्छा खासा प्रेजेंट में, बट एज यू इंक्रीज द मोर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, ये अभी बहुत कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है, पर जैसे इनको एनर्जी मिलती है, इन दोनों फॉस्फोलिपिड के बीच का जो स्पेस होता है, इट गेट फिल्ड अप बाय दैट कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एंड फ्लूइडिटी ऑलमोस्ट डिक्रीज, ठीक है, समझ आ गया, राइट डाउन। अनसैचुरेटेड, अगर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट नहीं है तो आपका अनसैचुरेटेड पेशेंट, मतलब वैसे भी आपका अनसैचुरेटेड ही ज्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजनेशन, मस्टर्ड ऑयल ज्यादा हेल्दी है या फिर घी, घी आप बोलोगे, आई नो दैट देखो भाई, मैंने बोला ना, अगर कोलेस्ट्रॉल, देखो घी क्या है, आपकी वो एक्सेस ऑफ एनर्जी दे रहा है ना, अगर इफ यू टॉकिंग विद रेफरेंस टू द एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कि ग्लूकोज, वैसे तो देखो व्हेन यू टॉक अबाउट द एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी नीड ऑफ योर बॉडी, सबसे पहले अगर सपोज दैट मैं फेंट हो जाऊं या कोई पर्सन फेंट हो जाए, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज, बट ग्लूकोज इज योर कार्बोहाइड्रेट, जो लोग जिम जाते हैं वो सबसे पहले क्या अवॉइड करते हैं, कार्ब्स, कार्ब्स नहीं खाना है, कार्ब शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज आप किस सेंस में ले रहे हो, कार्ब का जो वही आपकी जैगरी गुड हो जाती है और शुगर हार्मफुल हो जाती है,
ठीक है, अगर आप नॉर्मल बॉडी की बात करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सैचुरेटेड ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि स्टेबिलिटी जो अगर हमें फैट एक्यूमुलेशन करना है शिवम, तो हमें सैचुरेटेड ही लेना पड़ेगा ना। आप छोटे बच्चे को नहीं दोगे ना, छोटे बच्चे को हम लोग इसीलिए क्या दिलाते हैं, मिल्क दिलाते हैं, मिल्क देते हैं, घी इंक्लूड कराना शुरू करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके मसल में फैट कंजम्पशन होना जरूरी है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हम तब जाके प्रॉब्लम करेंगे व्हेन अमाउंट ऑफ फैट ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड, बॉडी सेल्स हैज ऑलरेडी मतलब डेवलप्ड विद दैट एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट, एक्सेस अमाउंट पे नहीं देना, बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू कलेक्ट इन दैट ब्लड वेसल्स। ठीक है, जनरल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर बॉडी फैट मसल्स को डेवलप ही करना है तो हमें सैचुरेटेड ही देना पड़ेगा, फिर तो घी, ऑब्वियसली घी इज इंपॉर्टेंट, मस्टर्ड ऑयल तो बेसिक बेसिक खाना है। मतलब ये आप कह सकते हो अनसैचुरेटेड जो होता है बहुत रेयर कंडीशन में हार्मफुल होता है, लेकिन अगर बेनिफिट के टर्म्स में बोलोगे तो सैचुरेटेड उतना ही बेनिफिट होता है, उतना ही हार्मफुल होता है। ठीक है, इन द एनर्जी टर्म्स। हाँ, मतलब इसीलिए मैंने इस कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट लिया, क्योंकि हम लोग सुनते हैं ना कि दैट पर्टिकुलर ऑयल डू नॉट कंटेन द कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल गेट एक्यूमुलेट इन द ब्लड वेसल्स। कब एक्यूमुलेट होएगा, जब आपकी बॉडी की फैट की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, तभी तो कोई भी, जैसे शुगर है, शुगर एक लिमिट अमाउंट तक आपके ब्लड में फ्लो करता है, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी फुलफिल हो रही है, बेसिक अमाउंट, बेसिक से कार्बोहाइड्रेट से। बट इफ योर बॉडी एनर्जी, डेली एनर्जी ऑफ बॉडी, डेली एनर्जी ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही है, फिर भी आप एक्सेस ले रहे हो, तब जाके वो स्टोर होना शुरू होता है आपके लिवर में और फैट में। ठीक है, देखो इस पे तो ऑलरेडी वैसे मैंने लिख रखा था, बट मुझे लगता है इस पे लिखवाना जरूरी है। इसमें देखो लिखा, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन द लिपिड कंपोजिशन इज टाइप ऑफ द फैटी एसिड्स मोइटीज इन द मेम्ब्रेन एंड अमाउंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लिपिड मेड ऑफ द सैचुरेटेड, ये लिखा है, चलो इसको लिख लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, कोलेस्ट्रॉल हैज डिस्टिंक्ट इफेक्ट्स मेड ऑफ द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड रिंग स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ही होता है, पेंटा रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ डिस्टिंक्ट रोल इन द फ्लूइडिटी, डिस्टिंक्ट रोल इन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट एक्ट एज अ बफर। ठीक है, अप टिल द सर्टेन अमाउंट की नहीं ब्रेक होगा, बफर की तरह एक्ट करेगा। कोलेस्ट्रॉल विल नॉट फॉर्म द मेम्ब्रेन by itself but insert into the bilayer of the phospholipid which is a polar hydroxy, लिख लेते, I don't know. The type of movements of lipid molecules, first इसी mean the type of movements of lipid molecules, role of lipid molecules. Lipid molecules very rarely migrate, lipid molecules very rarely migrate from one lipid monolayer, from one lipid monolayer to lipid bimolecular layer to another monolayer, one lipid monolayer to another monolayer। जैसे कि मतलब ये है कि ये वाली जो यहाँ वाली जो लिपिड है, कितना भी आप मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज कर दो, ये मूव होके यहाँ नहीं चली जाए, लाइक दिस। ये एक स्पेसिफिकली मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, दैट कॉल्ड फ्लिपेज फ्लॉपेज मॉलिक्यूल पैटर्न, वो भी लिखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड पोस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही रिमूव होके इधर चला जाता है। दैट पर्टिकुलर लिपिड मॉलिक्यूल यहां से यहां जाता है, बट दैट इज अ फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, नॉट द फ्लूइडिटी, ठीक है, जनरल टर्म में नहीं होता। मोनोलेयर टू अनदर मोनोलेयर, such type of movement is called, such type of movement is called flip flop, flip flop, flip dash flop, or trans bilayer movement, or trans bilayer movement, full stop. However, in membranes, however, in membranes where lipids are actively synthesized, where lipids are actively synthesized, कहाँ लिपिड सिंथेसाइज होती है, which cell organelle is responsible for the lipid synthesis? Name some cell organelle. यार स्मूथ यार है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर दैट प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर लिपिड सिंथेसिस, राइट ऑन। स्मूथ यार, स्मूथ यार, there is a rapid flip flop molecules, there is a rapid flip flop
movement of molecules, because because presence of presence of certain membrane bound enzymes, certain membrane bound enzymes called called phospholipid translocator, called phospholipid translocator, that is that is flippase, that is flippase. Full stop. But lipid molecule, full stop, but lipid molecule readily exchange places, readily exchange places, readily, quickly, readily, readily exchange places with their neighbors, with their neighbors within a monolayer, within a monolayer, that means this one is with this one, ऐसे, ठीक है, within a monolayer, that में लिखो 10 to power 7 times in a second, 10 to power 7 times in a second, which results in rapid lateral diffusion, rapid lateral diffusion, and maintain the fluidity, and maintain the fluidity. Full stop. As increasing the temperature, the lipid molecule get energy, the lipid molecule get energy, and and increasing the overall fluidity of the membrane, and increasing the overall fluidity of the membrane. With their hydrocarbon chains, as with their hydrocarbon chains are flexible. Next heading. Roles of unsaturated fats. Next point. Roles of unsaturated fats in increasing membrane fluidity. In increasing membrane fluidity. Unsaturated fats in increasing membrane fluidity. Yeah. A synthetic bilayer, a synthetic bilayer made from a single type of phospholipid, made from a single type of phospholipid, changes from changes from liquid state to rigid, changes from liquid state to rigid, crystalline, crystalline or gel slash viscous state, gel slash viscous state at a characteristic freezing point, at a characteristic freezing point. This change of state is called phase transition. And the temperature at which it occurs, and the temperature at which it occurs
becomes lower if the hydrocarbon chains are short. If the hydrocarbon chains are short or have double bonds or have double bonds. आंसर चेंज करके इसी में लिखो. Double bonds in unsaturated fatty acids या hydrocarbon chains. Double bond in unsaturated hydrocarbon chains tend to increase the fluidity, tend to increase the fluidity of a phospholipid bilayer by making it more difficult to pack the chains together and thus maintaining fluidity the fluidity. नेक्स्ट देखो व्हाट डज दैट मीन. जैसे कि अभी हमने आई हैव जस्ट टोल्ड दिस ना. देखो सपोज दैट व्हाट आई हैव सेड दैट. देखो एक तो होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पर द वन फैक्टर इज द टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर इज द ओरिजिनल कंपोजिशन. तो सपोज दैट अगर ये जो आपकी फैटी एसिड्स हैं, ये जो आपकी मेम्ब्रेन में दीज आर द फैटी एसिड्स, ये आपकी फैटी एसिड चेन है ना. अगर ये आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होंगी तो मेम्ब्रेन विल बी लेस फ्लूइड, जो कि आपकी कहां पर होती है, वो वाले मॉलिक्यूल, वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो आपके बहुत हाई टेम्परेचर में पाए, सॉरी बहुत लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं ना. दे बिकम रिजिड बिकॉज दे आर फंक्शनिंग एज अ स्टोरेज फैट. हमारे में स्टोरेज फैट ज्यादा होता है या उनमें ब्लैबर फॉर्म में ना, जो आपके कोल्ड एरियाज के एनिमल्स होते हैं, तो उनमें ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की जो फैटी एसिड चेन होती है, ये आपकी क्या होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बनी होती है. क्यों? बिकॉज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दिस, दे आर वेरी वेरी गुड इन पैकेजिंग. सो इवन इफ द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर दे बिकम स्टेबल. बट सपोज दैट नॉर्मल एरिया की जो टेम्परेचर, नॉर्मल एरिया के जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये जो फॉस्फोलिपिड की जो चेन होती है, दैट इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सब में अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है. Unsaturated fatty acids means even if you are increasing the temperature just because this, ये क्या कर रही है, अगर if the percentage of unsaturated fatty acids is maximum in the phospholipid bilayer, then the membrane will be more fluid because it is not having that good stability. तो मेंटेन रहती है, उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है. So first thing is actually the percentage, also the percentage of the saturated and the unsaturated fatty acids. ठीक है. टेम्परेचर के अलावा ये भी आपका कॉम्पोजिशन. थर्ड, राइट डाउन. रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन मेंटेनिंग फ्लूइडिटी. थर्ड वन, रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी. यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन contain a large amount of cholesterol up to one molecule which orient themselves in lipid bilayer that their hydroxyl group remain close to the polar head group of the phospholipid and rigid plate-like steroid rings
of cholesterol of cholesterol are closest to hydrocarbon chain are closest to hydrocarbon chain. Full stop. Depending upon the temperature, the cholesterol present in the membrane, the cholesterol present in the membrane has has distinct effects on membrane fluidity, on membrane fluidity. It acts as a buffer. It acts as a buffer as itself, as itself. Full stop. In general, cholesterol maintain the membrane fluidity. In general, cholesterol maintains the membrane fluidity. Full stop. As at higher temperature, as at higher temperature, cholesterol interferes. As at higher temperature, the cholesterol interferes with the movement of the phospholipid fatty acids, with the movement of the phospholipid fatty acids, making it less fluid, making it less fluid by filling the gap between them, by filling the gap between them, and overall reducing its permeability, and overall reducing its permeability. Because when the temperature increases, the area between the phospholipid, the area between the phospholipid and and the cholesterol molecules reduced. Next point इसी में, at low temperature, the cholesterol has opposite effect. The cholesterol has opposite effect by interfacing with interactions between fatty acid chains, full stop, a comma, and prevents membrane from freezing and maintain its fluidity. And also maintain mechanical stability of the bilayer. And also maintain the mechanical stability of the bilayer. समझ आ गया? रोल कर लेंगे अब. There's mainly three things. What is the three things? Although I'll provide that PDF, upload कर दूंगी उसमें. What is the mainly three things? The first is the composition or the percentage of the saturated or the unsaturated fatty acids in the phospholipid bilayer. Second one is the temperature. Temperature जब आप लिखोगे, if you want to write the temperature के साथ आप ऐसे लिख सकते हो. How to write the point? पहले फॉर्म में तो आप लिख दोगे percentage. Second फॉर्म में लिखोगे temperature. Impact of temperature on the phospholipid bilayer and impact of the temperature on the cholesterol. ठीक है, रोल आपका कंप्लीट हो जाएगा. अगर और भी अच्छा लिखना है, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो
तो टेम्परेचर की हेडिंग डाल के फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लीज ये डायग्राम बना लो, सो इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल। ये वाला डायग्राम बना लो या फिर ये बना लो, जो भी बनाना है, ये वाला बनाना है। हाई टेम्परेचर पे देखो कैसा हो रहा है, you just make this diagram, that is good enough। देखो ये है गाइस, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द परसेंटेज ऑफ द सैचुरेटेड ना, देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो चेन होती है, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी प्रॉपर्ली अलाइंड विद ईच अदर। so if the composition of the saturated fatty acid will be higher, this will be function as a storage form, very very stable। ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, so can we hear by seeing this diagram only। देखो इसमें क्या लिखा, फ्लूइड, इसमें क्या लिखा है, विस्कस, हमने पहले पॉइंट पे लिखा है, ठीक है। अगर आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा, सो योर मेम्ब्रेन विल बी मोर फ्लूइड। जैसे आपका सैचुरेटेड परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा, फ्लूइडिटी से आपकी जेल और विस्कस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम तो मस्त बना लो, बाकी देख लो जो बनाना है बना लो। पहले वाले पॉइंट का डायग्राम ये है। अगर 3-3 4-4 भी बनाने तो भी कंप्लीट हो सकता है, फटाफट बनाओ। ये तो श्योर बनाना है, जो पहला वाला पॉइंट है ना, परसेंटेज ऑफ द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसका ये डायग्राम है। तो इसके सिर्फ हाफ करके बना लो, लाइक 5-6 बनाओ, उसमें 2-3 ऐसे रैंडम दिखा दो, बट वो वाला श्योरली बनाना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। जेनेटिक्स में आप लोगों का एक टॉपिक है सिग्नलिंग, वो एक्चुअली आपका कनेक्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सो आई एम थिंकिंग टू कवर हियर ओनली। इसी बंदे ना, नॉट वॉइस। बना लिया, यस यस गो। क्या, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का लिपिड है, व्हेन वी कवर द बायोमोलिक्यूल्स वी राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड। तो कोलेस्ट्रॉल इट्स अ टाइप ऑफ लिपिड, उसमें 4 आपके रिंग होते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग होते हैं, तो 3 आर द 6 कार्बन और एक आपकी 5 कार्बन की रिंग होती है, और ऊपर से एक आपका एक फैटी एसिड की चेन जाती है, CH2 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 करके, लाइक दैट। आई थिंक 7 to 8 कार्बन की होती है, और एक तरफ इसका पोलर ग्रुप होता है। आप बताओ, that's what, no, that's what I'm saying। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक कंप्लीट लिपिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड की एक चेन होती है, जस्ट वन चेन, जैसे कि ये होता है कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल। अच्छा रुको, देखो ये है कोलेस्ट्रॉल, बट मैं वो लेके आ रही हूँ।
अरुण सर, भावना, रिमोट एसी नहीं ऑन करा है। समझ आ गया? सो वही देयर ओनली सिंगल चेन दैट इज अ सैचुरेटेड वन। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर मिलता है एक्चुअली ये इन दोनों के बीच का स्पेस फिल कर लेती है। ठीक है, दैट्स द कोलेस्ट्रॉल। एसी एसी रिमोट बोलेंगे अरुण सर, तभी तो मैं उनके पास गई थी। ठीक है, समझ आ गया? ये वाला डायग्राम बना लिया फ्लूइडिटी और विस्कस का। ऑनलाइन एनी डाउट? नेक्स्ट week heading function of the plasma membrane. Done online? Function of the plasma membrane. Right on. Plasma membrane acts as a thin barrier which separates intracellular fluid or intracellular component slash cytoplasm from the extracellular component in which the cell lives and performs various important physiological functions First, permeability. The plasma membrane is a thin elastic membrane around the cell which allows the movement of the molecules and various substances through it. Thank you so much, Kartik sir. And various substances, ये और भी कहीं का है क्या? यही? कोई बात नहीं. Thank you so much. And various substances through it, molecules and various substances through it called permeability, which occurs through mainly two process. One is a passive transport. Second is an active transport. Passive transport में लिखो simple diffusion and facilitated diffusion. Simple diffusion and facilitated diffusion. Make the heading simple diffusion. When molecules simply dissolve, the phospholipid bilayer and diffuses across it
and diffuses across it, full stop. In this process, in this process, no membrane proteins, no membrane proteins, comma, no metabolic energy is consumed, no metabolic energy is consumed. To support this transport, to support this transport. This process is occur, this process is occur simply, simply by the concentration of molecules, simply by the concentration of molecules inside and outside of the cell, inside and outside of the cell, and transport slash movement of and transport slash movement of solutes by the diffusion, by the diffusion is always from higher concentration to lower concentration, is always from higher concentration to lower concentration, which can be described by, which can be described by the Fick's law, FICKS, the Fick's law of diffusion. That is J is equal to minus D delta C upon में delta X. ठीक है, J is equal to flux per unit area, J is equal to flux per unit area, D is equal to diffusion coefficient, D is equal to diffusion coefficient, delta C is equal to difference in concentration, difference in concentration, and delta X is equal to difference in membrane thickness. Simple membrane thickness. Delta X is equal to membrane thickness. Next point लिखो एक. Some solutes diffuse through the plasma membrane. Some solutes diffuse through the PM plasma membrane more radially than others. More radially than others. Therefore, it is called. Therefore, it is called as selectively permeable. As selectively permeable. Or the slash differentially permeable membrane. Differentially permeable membrane. स्टॉप बना के पॉइंट लिखो इसी में या नेक्स्ट स्टैंजा में. When water molecules move through, when water molecules move through the differentially permeable membrane, the differentially permeable membrane from lower to higher concentration, from lower to higher concentration of solutes, जो dissolve हो रहा है, and because water is a solvent, है ना, of solutes. The process is called osmosis. The process is called osmosis. Next, make the heading facilitated diffusion. Next, make the heading facilitated diffusion.
So what is the meaning of the passive transport? No utilization of energy, कोई एनर्जी नहीं यूज होती, ठीक है. Whenever suppose that if you want to make the diagram of this, क्योंकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन पे शॉर्ट नोट बहुत बार पूछा गया है, आईएएस में तो पूछा ही गया है, सिंपल फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोल देते हैं, इसमें आपको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना होता है. आईएफएस में इट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये वाला टॉपिक है ना, इससे आपके एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट पूछे गए, ठीक है. इसीलिए दैट व्हाई वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट अ लिटिल मोर इलैबोरेट. ऑब्वियसली 2 दिन से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चल रहा है, ठीक है. देखो, सपोज दैट यू वांट टू शो दिस डायग्राम, सो दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट, आप कोई भी दूसरा कलर का पेन या कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे करके लिख लो, उसकी कंसेंट्रेशन क्या कर दो, इधर साइड में हायर कर दो और इधर साइड में क्या करो, लोअर कर दो, ठीक है. कंसेंट्रेशन, नॉट द मॉलिक्यूल. And this so simply because of the higher concentration of the external and the inner concentration of the internal, so molecule can pass from the higher concentration, like from the A to B side by itself without utilization of energy molecule. That's simple diffusion process. यही प्रोसेस अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो दैट इज योर ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन इज सिंपल, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है. And that process is facilitated by because of the water molecule. That is why we called it osmosis. Right? Facilitated diffusion. देखो, facilitated diffusion भी क्या होता है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है. देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. सिंपल डिफ्यूजन में देयर इज नो एनी एक्सेस हेल्प, ना ही आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, ना ही आप एनी टाइप ऑफ प्रोटीन यूज करो. जैसे कि हमने वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटीन. व्हाट इज द सेंस ऑफ द प्रोटीन? Remember when we make the plasma membrane का structure, we have mentioned that aquaporin. ठीक है, aquaporin क्या है? Aquaporin is a type of protein which is generally embedded in the plasma membrane. ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल, aqua मतलब वाटर, या जनरली ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इसमें एनर्जी तो यूटिलाइज नहीं करते, दैट इज व्हाट कंसीडर्ड एज पैसिव डिफ्यूजन. बट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन यूज करते हैं. जैसे कि एक हो गया आपका एग्जांपल एक्वा प्रोटीन, सेकंड आपका एग्जांपल हो गया क्लाथरिन कोटेड प्रोटीन, है ना, इसकी बहुत सारे एग्जांपल है. बट by using that particular kind of protein, still we are not utilizing energy. That is why facilitated still is your passive transport. Got it? Right now, facilitated diffusion is a special type of passive transport, is a special type of passive transport in which ions or molecules cross some membrane proteins, cross the membrane, comma, rapidly because specific permeases in the membrane facilitate their crossing. Full stop. Like the simple diffusion, this process also does not require metabolic energy, and it occurs only in the direction of concentrated gradient, Full stop. It is characterized by following specific feature. First, the rate of transport of the molecule, across the membrane is far greater
is far greater than than the simple diffusion than the simple diffusion. Second, this process is specific. This process is specific as as each facilitated diffusion protein as each facilitated diffusion protein called dash slash called protein channel transport only transport only a single piece of ion or molecule, a single piece of ion or molecule. Next, there is a maximum rate of transport. There is a maximum rate of transport. Write it down. Next point, carrier proteins such as carrier protein such as ये लिखा है ग्लूट GLUT ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होते हैं. Carrier proteins such as this is mentioned GLUT. ब्रैकेट में लिखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर function in erythrocytes function in erythrocytes that is GLUT1. हार्ट में लिवर में there's a different channel of the GLUT. जब हम लोग पढ़ेंगे आयन बैलेंस आपके सिलेबस में then now audible Manisha.
Done. Next medium in active transport. Next medium in active transport. This transport occurs. हो गया ना सबका डायग्राम ऑनलाइन डन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार पहले प्रोटीन रैंडम बनाना है इतना स्ट्रक्चर ही बनाना है बिल्कुल सिंपल बनाना है स्ट्रक्चर एक सेल ओपन कर दो so that we can show that without even utilization of energy this is sorting and this is like from extracellular to the intracellular that's it the voice is not अपन से किसी टेक्निकल वाले को बोल दीजिए मैं बोल वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है इट्स नॉट क्लियर एट ऑल बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है गाइस ब्रेक हो रही ऑडिबल active transport active transport is specific method of transportation active transport is specific method of transportation of molecules slash substances voice is not clear go on को ठीक है अभी ऑडिबल है रोहित मनीषा प्रॉपर्ली I'm audible guys it's a specific type of against the in which the molecule or substance transport against the concentration of gradient against the concentration of gradient and which is mediated by the carrier proteins and which is mediated by the carrier proteins or specific transport proteins or specific transport proteins called pumps which utilizes the metabolic energy in the form of ATP against the concentration gradient. For example,
For example, in both vertebrates and invertebrates, for example, in both vertebrates and invertebrates, the concentration of sodium ion, the concentration of sodium ion is around 10 to 20 times higher is around 10 to 20 times higher in the blood in the blood than than within the cell, while the concentration of potassium while the concentration of potassium is reverse and 20 to 40 times higher inside the cell and 20 to 40 times higher inside the cell. Therefore, therefore, the different types of pumps or channels uses for the movement of these ions, for the movement of these ions, such as sodium, potassium, ATPase, such as sodium, potassium, ATPase. So stop. Next one. It is of mainly two types. Active transport is mainly of two types. Active transport is mainly of two types. Primary, ऐसे पेज खोलना सीख लेते like that. This. Two types. Primary active transport, secondary active transport. Primary active transport, secondary active transport. Primary में this transport is coupled directly with the metabolic source of energy. This transport is coupled directly with the metabolic source of energy, such as ATP hydrolysis, such as ATP hydrolysis, comma, absorption of light, etc. etc. इसकी एग्जांपल में लिखो सोडियम पोटेशियम एटीपेज. ओके, इसकी एग्जांपल में प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल में सोडियम पोटेशियम एटीपेज. और इसकी को करें अभी को करिए मनीषा. Still? Yes or no? No, ma'am. Okay, fine. Write down. Secondary active transport. देखो, secondary active transport. It is an indirect transport. It is an indirect transport. Occurs when endergonic ब्रैकेट में लिखो uphill transport
bracket close, of one solute, of one solute which is coupled with, which is coupled with exergonic, which is coupled with exergonic, bracket में downhill, downhill, bracket close, flow of different solute, flow of different solute that was originally pumped, that was originally pumped, primary active transport, primary active transport. Where on? It is, full stop, it is either symport or antiport. It is either symport or antiport. Collectively, comma, it is either symport or antiport. Symport and antiport. Collectively called co-transport. Co-transport. Example, sodium glucose transporters. Sodium glucose transporter. Pump. Transporter pump. खत्म है. देखो. What is the meaning of that? Suppose that this is a membrane. ठीक है? So ये तो सिंपल आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है. ठीक है? सपोज दैट व्हाट वी कैन सी हियर वी कैन सी दिस इज द कंपाउंड जिनका कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, लो है, और इसका कंपाउंड इंट्रा सेलुलर क्या है, हाई है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. जब हम लोग व्हेन वी गोइंग टू कवर दैट आयन बैलेंसेस, so there are so many times it is required that even the lower concentration is outside of the cell, you need to transport that particular ion or channel, that particular ion or substance inside of them. जैसे कि इसका सिंपल बेसिक एग्जांपल है, जब आप लोग नर्व सिग्नलिंग पढ़ते हो ना, so when we cover the nerve signaling, so we talk about 3Na plus 2K plus ion transport. अभी हमने क्या पढ़ा कि सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या कहाँ ज्यादा होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग में, जब ये एक्चुअली आपका को ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल है. जैसे कि अगर कंसंट्रेशन हायर है या लोअर है, यहाँ पे सिंपल आपके एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हो जाता है. एटीपी इज ब्रेकिंग डाउन इनटू एएमपी प्लस सीएमपी. एटीपी यहाँ पे जब व्हेन यू शो दैट रिएक्शन, सो यू शो दैट रिएक्शन द एडीपी प्लस एएमपी. ठीक है, दैट इज अ डाई एंड मोनो ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल एंड गिविंग द एनर्जी, सो दैट दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अकर सिंपल विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सेस एनर्जी मॉलिक्यूल. जैसे कि टेम्परेचर, समझ आ रहा है, सिंपल एनर्जी का ब्रेकडाउन होने से आपको एनर्जी मिली और इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स को आपने ट्रांसपोर्ट करा दिया. ये तो हो गया आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपकी डायरेक्ट हाइड्रोलाइजेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है. जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना. सो ग्लूकोज से, सो इन दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस वी आर सीइंग दैट ग्लूकोज से आप क्या बना रहे हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो यहाँ पे हम लोग एटीपी एनर्जी ब्रेकडाउन करते हैं ना, so that in that glucose molecule we are adding that one phosphate molecule, है ना. यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये सिंपल आपका एक्टिव एनर्जी का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी? यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली हो रही है. अच्छा, लिसन वन थिंग, so we talk about that co-transport. What is the meaning of co-transport? यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट होता है. co-transport में सपोज दैट दिस इज योर मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पे आपका Na+ है, यहाँ पे आपका K+ है. ठीक है, Na+ is higher outside of the cell, listen carefully. ठीक है, and K+ is higher inside of the cell, या फिर K+ भी आपका इधर ही हायर है, K+ भी हायर इनसाइड ऑफ द सेल. कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, सोडियम ग्लूकोज ले लेते हैं, बेटर है क्योंकि वो एग्जैक्टली आपका एग्जांपल है. सोडियम ले लेते हैं और ग्लूकोज ले लेते हैं. ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, यहाँ पे आपका Na+ है. तो ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, थिंक ऑफ द गट कैनाल सिस्टम. ठीक है, आपके सिस्टम में इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये आपका इंटेस्टाइन है. यहाँ पे आपने खाना खाया,
खाना खाया, देन योर ब्रेक डाउन ऑफ दैट ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलेस्ट दैट इज द ग्लूकोज। अब यहाँ से क्या होना है, यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है इसमें क्या होना है, अब्सॉर्ब होना है, ठीक है, इसमें क्या होना है आपका, अब्सॉर्ब होना है, ये आपका गट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन अकर होता ही है सोडियम पोटेशियम के। सो दैट पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट, या कोई भी कंसीडर सिस्टम ऐसा कर लो, यहाँ पर हायर है बट इसको कहाँ जाना है, अभी ब्लड में जाना है, गट सिस्टम से कहां पर जाना है इसको, ब्लड में, ठीक है। सो अब ये कैसे जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन चला जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। ये अकेले नहीं जाएगा, ये तभी जाएगा whenever it goes, the glucose transport, it goes from their higher concentration to the lower concentration, then it releases a large amount of energy। कोई भी चीज अपने हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन से जाती है तो वहां पे एक बहुत एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने बात करी थी, ठीक है। दैट एनर्जी रिलीज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ दैट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम देयर हायर टू द लोअर कंसेंट्रेशन, दैट एनर्जी मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड बाय दैट दिस सोडियम ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दैट, सपोज दैट यहाँ पे आपका लोअर है और यहाँ पे आपका हायर है, क्योंकि आपने खाना खाया है। सो व्हेन यू हैव टेकन द फूड, उसमें आपका सोडियम चैनल्स भी तो होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड में आपका सोडियम आयंस भी तो होते हैं। सो सोडियम कैन नॉट मूव फ्रॉम दैट यहाँ से यहाँ डायरेक्टली, तो जब आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल मूव होगा उसके साथ में आपका, बिकॉज फ्रॉम देयर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग, बिकॉज ऑफ विच द सोडियम आयन कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ दैट इज कॉल्ड द को ट्रांसपोर्ट। When we talk about the secondary active transport cannot occur in that single molecule, it always occur in that co-transport, मतलब दो मॉलिक्यूल के साथ में। यहाँ पे आपकी दो प्रोसेसेस होती है, एक होता है सिम्पोर्ट, ठीक है, एक होता है सिम्पोर्ट और एक होता है आपका सेकंड वन इज योर एंटीपोर्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिम्पोर्ट में व्हाटएवर, बिकॉज बोथ आर द टाइप ऑफ दैट को-ट्रांसपोर्ट, तो सिम्पोर्ट में बोथ मॉलिक्यूल्स गोइंग ऑन द सिमिलर साइड, antiport में one molecule is going inside, so another molecule is going outside. They are using the energy, yes they are using the energy, but they are not utilizing the energy in the direct metabolic form, मतलब जो आपका ATP molecule है वो डायरेक्ट ब्रेक होकर आपकी एनर्जी नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी बिकॉज ऑफ द वन कंपोनेंट विच इज मूविंग फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसेंट्रेशन, एंड देन इट इज रिलीजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी so that the another component can move from the lower to the higher concentration। समझ आ गया। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक ये भी मेथड है, लाइक को ट्रांसपोर्ट और एंटी ट्रांसपोर्ट, बट सम ऑफ द सेल्स व्हेन यू टॉक अबाउट द फैट सेल्स और द मसल सेल्स, वहां पे इस कंपाउंड के इस कंपाउंड में इट्स अ वेरी रेयर बट इट अकर्स, ऐसा वो नहीं है कि जब पहला कंपाउंड यूटिलाइज होगा उसी में आपकी इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेक डाउन हो जाएगी, सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज इन दैट, बट वो बहुत रेयर है। मेजर कंपोनेंट आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ आ गया दृष्टि, कोई डाउट? शिवम, प्राइमरी में डायरेक्ट एटीपी ब्रेक डाउन हो रही है, यहाँ पे एटीपी रिलीज हो रही है क्योंकि ना आपकी बॉडी में एनर्जी करेंसी इज एटीपी, बट दैट आपकी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही बिकॉज वन कंपोनेंट इज मूविंग फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो वो क्यों जा रहा है, like why there's a need to move the ion or the channel from one area to another? Obviously there are some purposes, जब वो in like when any molecule can go by itself, that means it is your exergonic process, जैसे कि हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस पढ़ते हैं, है ना, वो जा ही इसलिए पा रहा है क्योंकि वो फैसिलिटेट हो पा रहा है, मींस उसमें एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, मींस एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए ऑब्वियसली वी आर यूटिलाइजिंग एनर्जी, बट क्या एवरी सिंगल टाइम व्हेन वी डू रेस्पायर वी फील दैट वी आर यूटिलाइजिंग एनर्जी? नो, because ultimately we are getting the energy in the large amount of that 36 34 ATP हमारी बनती है, ठीक है। Similar process is that यहाँ पे when any component moving from their higher concentration to lower concentration, वहां पे एक अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट वो एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रिलीज एनर्जी एनी अदर कंपोनेंट उसी के साथ में होता है। इसका एग्जांपल आपका सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है ग्लूट में, ठीक है। ब्रेन सेल्स में भी एग्जांपल है। सो अनदर कंपोनेंट कैन मूव फ्रॉम द लोअर टू द हायर, सिमिलर डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिम्पोर्ट एंड द एंटीपोर्ट। गॉट इट? कोई डाउट? अनुष्का, पक्की बात? Always, always, never it can be the alone one, ठीक है, that's a code transfer। Next, I don't
ट्रांसपोर्ट ऑफ हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सिंपल लिख लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो जो हम लोग अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये जनरली आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अभी हमने क्या लिखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो आपका H प्लस पंप होता है, प्रोटॉन और H प्लस पंप, वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। हम लोग उसको आयन बैलेंस में, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, द पैसिव एंड दैट एक्टिव वन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स across the plasma membrane, across the plasma membrane is more complex process, is more complex process which occurs slash carried out in the membrane bound vesicles, in the membrane bound vesicles or another methods, or another methods. Methods ऐसे करके लिखो, to move outside to inside of the cell, to move outside to inside of the cell, called endocytosis, called endocytosis. From inside to outside, exocytosis. From inside to outside, exocytosis. Full stop. Next point. Both of these method majorly help in import and export of large molecules. Import and export of large molecules. Full stop. Sometimes this process also occur through the method of phagocytosis. Through the method of phagocytosis. Now make the heading endocytosis. Now make the heading endocytosis. एंडोसाइटोसिस पे देयर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पे भी बहुत बार क्वेश्चन बने रहे डाउन। इसमें रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस यहाँ से पूछते हैं, और इसी पॉइंट को फिर कनेक्ट करके आपकी बायोकेमिस्ट्री में स्टेरॉइड और पेप्टाइड हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स आपके कैसे होते हैं, हाइड्रो, स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रो, पिटाई पड़ेगी शिवम, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो दैट मींस दे कैन ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली, है ना, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, बाय द सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट, while the peptide or that amino acids transport through that active transport. जब हम लोग इसकी बात करते हैं, even when we talk about some large molecules steroid hormones में, then we talk about the endocytosis. यहाँ से ही आपका एक टॉपिक कनेक्ट होगा, that is your immunology, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहे हैं phagocytosis. तो आपकी सेल मेम्ब्रेन का जो चैप्टर है वो आपके डिफरेंट यूनिट से कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। ऐसे बोल देगा, व्हाट इज द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, डिस्क्राइब द स्टेरॉइड हार्मोन ट्रांसपोर्ट थ्रू द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। स्टेरॉइड हार्मोन आपका बायोकेमिस्ट्री में है और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस आपका यहाँ पर सेल बायोलॉजी, ठीक है। चलो राइट डाउन। This process, this term endocytosis is coined by Christian D. Dewey in 1963. It is a process whereby the eukaryotic cells internalize
internalize materials from their surrounding environment from their surrounding environment slash extracellular extracellular to intracellular, yeah, inside of the cell, to intracellular or inside of the cell, whatever, which is achieved by which is achieved by the formation of which is achieved by the formation of membrane bound vesicle at the cell surface at the cell surface that arises by progressive invagination of the plasma membrane when we talk about the lysosomal की different four forms, उसमें भी यही process है आपका endocytosis. ठीक है, लाइसोसोम की फोर फॉर्म से भी हमेशा ही क्वेश्चन आ रखा है. बायोकेमिस्ट्री अगेन, invagination of the plasma membrane followed by pinching 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 of and release of the vesicles into the cytoplasm. Read it once. क्या समझ आ रहा है? पढ़ो इसको एक बार. आ गया? समझ आ गया? अनुष्का क्या समझ आया? Invagination मतलब like this. Yes, like this. ठीक है, फिर this. इन्वेजिनेट करना हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं. सेल्स इन्वेजिनेट होती है ना जब आप लोगों का सीलोम बनता है, तो सीलोम बनता है जब आपका ट्रू सीलोम जब बनता है, तो इट्स लाइक दैट इन्वेजिनेशन प्रोसेस. ठीक है, चलो इमेजिनेशन तो इमेजिन करना होता है. ठीक है, इन्वेजिनेशन. अच्छा सॉरी, आई डिडंट कंटिन्यू. ठीक है, देखो सिंपल इसको कंसीडर ऐसे करना है कि व्हेन आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंडोसाइटोसिस, सो ऑलवेज फोकस ऑन दैट. यहाँ पे हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू राइट दैट एक्स्ट्रा टू इंट्रा टू एक्स्ट्रा. सपोज दैट एनी बिग मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट ओवर देयर, so what we get it through that active or the passive transport, we generally transport the smaller molecules. So suppose that it's a big molecule. So actually endocytosis जो process है ना, वो आपका दो मेथड से होता है. One is a phagocytosis. Phagocytosis कौन करती है? मैक्रोफेजेस, आपके इम्यूनिटी सेल्स. और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस. ठीक है, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. ठीक है, दैट इट इज कॉल्ड सेल ईटिंग प्रोसेस. इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस. ठीक है, सिंपल. यहाँ पे क्या, सपोज दैट दिस अ बिग मॉलिक्यूल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डू हैव द फ्लूइडिटी. ठीक है, तो वो क्या करेगी, ऐसे इन्वेजिनेट करेगी और इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को, इस पर्टिकुलर पार्टिकल को जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, इसको इनसाइड ऑफ दैट ले लेगी. अब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने इसके थ्रू पास करेगी और अब इसको इनसाइड ऑफ दैट छोड़ देगी.
जैसे यहाँ पे रिलीज करेगी, यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी और वापस इस स्ट्रक्चर में। I'll show the diagram. That is simple endocytosis. यहाँ पे there is not occurring any utilization of energy or the carrier protein. Just every single function is done by the plasma membrane, either through the invagination or that exvagination. ठीक है? Yes, yes, amoeba. Macrophaging activity is the amoeba. उसको हम लोग, but amoeba actually amoeba pinocytosis करता है. सिमिलर प्रोसेस है, मतलब उसको क्या करता है, अमीबा डिसॉल्व करने की कोशिश करता है, देन उसको इनगल्फ करता है. ठीक है, यहाँ पे यही प्रोसेस को हम डिसॉल्व करके हल्का सा ट्राई करेंगे, देन इट विल कॉज द पिनोसाइटोसिस. ड्रिंकिंग मतलब इसको फ्लूइड बनाने की कोशिश करता है, देन इट विल इन्वेजिनेट. चलो मेक इट रेडी. मैक्रोफेज. सेल मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती है. नॉट इग्नोर. कहां पर, किस साइड पे? नहीं नहीं, इट जस्ट जैसे कि अमीबा देखा है, तो जैसे कि ये अमीबा है, ये इसका फूड पार्टिकल्स, तो ये एक इसको कवर बना लेती है, तो देन इट इज द सिंपल. ब्रेक नहीं होती है, एक्स्ट्रा लेयर बना लेगी, या यही वाली लेयर जो है, सपोज दैट कैसे बन रही है ये लेयर, यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दिया. ठीक है, देन इट इज इनगल्फिंग लाइक दैट. मैक्रोफेजेस में थोड़ा सा यही डिफरेंस है. मैक्रोफेजेस में डायरेक्टली इनटेक करी, फिर वो ब्रेक डाउन हो रही है. नॉर्मल पिनोसाइटोसिस में ब्रेक डाउन नहीं होती. अभी लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो समझ जाएगा. राइट ऑन. मैक्रोफेजेस, राइट ऑन. फैगोसाइटोसिस, सॉरी, फैगोसाइटोसिस. फर्स्ट phagocytosis. It is also known as cell eating process. It is also known as cell eating process, which was reported by Metchnikoff, 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 who described Metchnikoff, who described the internalization of large particles, who described the internalization of large particles following binding to specific plasma membrane receptors, and by the formation of large endocytic vesicle, it reaches to cytoplasm by invagination and called phagosomes. Next point देखो. It occurs in the specialized mammalian cells. किसमें होती है? इम्यूनिटी वाले WBC में किस टाइप की सेल में होती है? इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स और monocytes. Right on. It occurs in the specific mammalian cells such as monocytes, basophils and neutrophils. And also other macrophages. It is an active and highly regulated process done by signaling cascade.
यही प्रोसेस आपका स्टेरॉइड हार्मोन में ऐड होगा. सिग्नलिंग कैस्केड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्केड? एनी आइडिया? टेल मी. ग्रुप कंपटीशन, कॉम्बिनेशन, क्लोज, वेरी क्लोज. देखो, सो व्हाट हैपनिंग, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है विच इज एंडोसाइटाइजिंग, और इसका जो इंगल्फिंग हो रहा है, दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज एंटरिंग बिकॉज ऑफ द सम स्पेसिफिक पर्पसेस, जैसे कि कंसीडर स्टेरॉइड हार्मोन, सीधे सीधे कंसीडर कर दें, इट्स अ वेरी बिग, है ना, सो दैट इट कैन नॉट एंटर थ्रू दैट पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्शन, उसके थ्रू नहीं आ पा रहा है, ठीक है. सो जब ये मॉलिक्यूल एक्चुअली ना, दिस प्रोसेस इज नॉट इट दैट सिंपल. जब ये एंडोसाइटोसिस, वेसिकल फॉर्मेशन, ये सारा होता है, सो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है, बिकॉज इट्स अ बिग प्रोसेस. मेम्ब्रेन नीड द फ्लूइडिटी. कहां से आएगी फ्लूइडिटी? ये वेसिकल फॉर्मेशन बना रही है, इतना एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना रही है, कैसे आएगी एनर्जी? यहाँ पे एटीपी से, ठीक है. So what happens? जैसे ही as soon as membrane start forming the vesicle surround that your molecule, ATPs break down. ATPs break down in ADP plus CAMP, cyclic AMP. यहाँ पे CAMP पे आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स भी हैं. This is a very important function. It is acting as a secondary messenger. It is acting as a secondary messenger. ठीक है. जैसे ये रिलीज होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी इसको मिल रही है, जैसे ये रिलीज होता है, सपोज दैट इस पर्टिकुलर स्टेरॉइड हार्मोन की सिग्नलिंग, ये आपकी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये इनसाइड ऑफ द सेल थी, न्यूक्लियस में है. अब ये सीएमपी जाता है, न्यूक्लियस रिसेप्टर में बाइंड करता है, और वहां पे एक पर्टिकुलर किसी को एक्टिवेट करेगा, फिर वो जाके फिर न्यूक्लियस में किसी को एक्टिवेट करेगा. फाइनली जो फंक्शन इसका है, जिस पर्टिकुलर टारगेट को, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टारगेट मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है. So what is the specific function of that particular molecule which is trying to enter inside of that cell? It is actually occurred through that continuous signaling process. जैसे कि मैंने आपको सिग्नल दिया, आपने उनको दिया, आपने उनको दिया. That process is called the cascading process. समझ आया? और इसमें हेल्प कौन कर रहा है आपका? सीएमपी. सेकेंडरी मैसेंजर होता है, सीएमपी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है आपको. सीएमपी पे शॉर्ट नोट है, सीएमपी है तो सेकेंडरी मैसेंजर पे भी आपके लिए शॉर्ट नोट क्वेश्चन आया. दृष्टि समझ आ रहा है? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना? आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट, ये सारे टॉपिक हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे सिंपल आपको ये समझना है दैट व्हाट आर द मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. ये प्रोसेस में व्हेन वी हैव यूज्ड दिस वर्ड सिग्नलिंग ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग मतलब किसी चीज को सिग्नल देना, कैस्केडिंग मतलब one is going to second, second is going to the third, third is going to the fourth. That is process a continuous manner, because start of some definite process is called the signaling cascade. Simple. समझ आया? किसमें? हाँ, उसी को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं. जैसे कि सपोज दैट आपने जीएसटी, मतलब उसके मल्टीपल इंपैक्ट, अगर आपने जीएसटी इंप्रूव करिए तो आपने टैक्स इवेजन बचाया, टैक्स इवेजन बचाया तो आपने मोर टैक्स कलेक्शन हो रहा है, मोर टैक्स कलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट के पास मोर. इट्स अ कनेक्टिंग प्रोसेस, ये दैट इज कॉल्ड द कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है. चलो नेक्स्ट आई राउंड. नेक्स्ट बिग हेडिंग, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, mark it, make the star out in it. Endocytosis. Endocytosis. In this process, a specific receptor, ध्यान से लिखना है स्टेटमेंट को, on the surface of the plasma membrane, on the surface of the plasma membrane recognizes, underline that, recognizes, inverted comma में करो, recognizes an extracellular macromolecule, and extracellular macromolecules, and binds with it, full stop. The substance bound with the receptor, the substance bound with the receptor, ब्रैकेट में लिखो रिसेप्टर के साथ, present on outer surface of PM,
bracket close, is called present on meshy structure neutrophils. Okay, no मैं okay क्या क्या बोला अनुष्का of plasma membrane bracket close is called ligand. Ligand, Ligand, ligand. देखो what is the difference between that normal endocytosis and receptor mediated endocytosis? Suppose that when this is a plasma membrane, when any particular molecules try to enter into that, plasma membrane will not start forming ऐसे ही, basically ऐसे नहीं form करने लगेगी. So we have mentioned that what we present here, the glycoproteins, right, and the glycolipids. So when we have mentioned in the today's start of the class carbohydrates, तो हमने इसकी function में क्या लिखा है? What is the function of the carbohydrate molecule जो आपकी plasma membrane पे that help in the recognition of the molecule. Until ये जो आपका ligand, ये particular जो ligand है, इसको बोलते हैं हम ligand, ठीक है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर, ठीक है. Until that receptor will not recognize this ligand, that particular substance will not allow to enter into that inside of that molecule. Simple. That is called receptor mediated endocytosis. ठीक है, particular के लिए particular आपका signaling, that is also the signal cascade. ठीक, we'll do in the next class. खत्म. देखो अभी अगर नहीं से भी समझ आ रहा है, just no issues. नेक्स्ट क्लास में ना अपन show the diagram. So it will be much more easy to show that endocytosis and the exocytosis. ठीक है. मेल आईडी क्या? हाँ हो गया, बस और अच्छे से कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है मुझे उसकी, ठीक है. अभी आज नहीं, नेक्स्ट में देंगे. इकोलॉजी का, इतो का भी नहीं हुआ, इकोलॉजी का नहीं हुआ है ना अभी. इकोलॉजी का हो गया है आप लोग. नहीं नहीं वो नहीं, एक यूनिट टेस्ट नहीं हुआ ना इकोलॉजी का, हो गया है, नहीं हुआ. नेक्स्ट सैटरडे इकोलॉजी का टेस्ट, उसके नेक्स्ट इथोलॉजी, ठीक है. इथोलॉजी के सारे नोट्स अपडेट हो ही चुके हैं, सारे कल्चर हमने अपडेट कर ही दिए, है ना. इस सैटरडे आप लोगों का इकोलॉजी का टेस्ट है, कल नहीं, नेक्स्ट कमिंग सैटरडे सारा एक बार प्रिपेयर कर लेना. kyoti.plutusis@gmail.com, ठीक है. थैंक यू.